पेट झड़ला पर दवाई खायल जाइ छै। अब पहिने ओना नहि होइ, पहिने घरमे जे किछु आयुर्वेदिक सामान सब छलै तकरा लोक उपयोग करै छलै। एखनो ओना जीवन जल अत्यंत जरूरी छै, लेकिन ओ बाहेकके सेहो घरमे किछु चीज छै जाहिसँ अहाँके पेट खराबीके मात्र दूर नहीं कऽ सकै छी, जे कमजोरी सब जे शरीरमे देखल जाइ छै तकरा सेहो समाप्त कयल जा सकै छै, जाहिमे एकटा केरा भऽ सकै छै, जीरा पानि भऽ सकै छै। ओ बाहेकके आओर बहुत रास चीज छै जाहिसँ पेट झड़ऽवला काजके रोकल मात्र नहीं जा सकै छै, ओहिसँ जे ओहिमे समस्या सब भेल रहै छै तकरा सेहो समाधान करऽमे बहुत काज करै छै। पेट झड़ी भेला पर घर में पाओल जायवला सेहो सामान सबके उपयोग केलासँ अहाँ ओहिमे कमी आनल जा सकै छै। बहुतके तऽ इहो सब खेलासँ पेट झड़ी समाप्त होइत अछि, तेहनो बात सब आयल अछि, जाहिमे एकटा केरा सेहो अछि। हमरा होइए जे हरेक घरमे केराके गाछ रहैत अछि, बहुतके घरमे फड़बो करैत छै। तऽ केरामे पैक्टिन नामक पोषक तत्व होइत अछि। ई एक प्रकारसँ घुलनशील फाइबर अछि जे पेट झड़ीमे लड़ऽसँ वा ई पेट झड़ी के समस्या समाधान करऽमे मदद करैत अछि। ई बॉडीमे इलेक्ट्रोलाइटक बैलेंसके बनाबऽमे काज करैत अछि, जे पेट झड़ीक क्रममे बिगड़ि जाइत अछि। एक बेर बॉडीके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कंट्रोलमे आबऽके लेल ई रिकवरके काज सेहो करैत अछि। दोसर यदि बात कयल जाय तऽ हरदि सेहो छै। हरदिके सेवन पेटसँ जुड़ल बहुत रास समस्याके समाधान सेहो करैत अछि। एहिमे एंटीबायोटिक गुण होइत अछि, जे आंतमे बैक्टीरियासँ लड़ कऽ लूज मोशनमे आराम दैत अछि। एहिमे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सेहो होइत अछि, आ एहिमे एंटीऑक्सीडेंट सेहो बहुत होइत अछि, जे पाचन तंत्रके स्वस्थ रखैत अछि। जहाँ धरि जीरामे सेहो खास कऽ जीर एंटीसेप्टिक गुण होइत अछि, जे आंतमे जे खराब बैक्टीरियाके समाप्त करऽमे सेहो ई सहयोग करैत अछि, जाहिसँ बिगड़ल पेट सेहो ठीक होइत अछि। जीर पानि पीब कऽ अहाँ बॉडीके रिहाइड्रेट कऽ शरीरके सेहो सामान्य राखि सकै छी। दहीके विषयमे तऽ बहुत बुझले हैत बहुतो गोटेके, दहीमे बहुत बैक्टीरिया होइत अछि जे आंतके स्वस्थ राखऽमे मदद करैत अछि, आ खास कऽ लूज मोशन करऽवला बैड बैक्टीरियासँ ई लड़ैत अछि। आ दही खेलासँ पाचन तंत्र सेहो बढ़िआँ होइत अछि, तेँ भोजनके अंतिम समयमे दही लोकके खुआएल जाइत अछि।